Okay, now the chapter that we have already completed is morphology. And in the process of morphology, we have finished everything relating to external structure, external, parts of the root, stem, leaf, flower, fruit, seed. Now, from the external, we now move on to internal. Right? In the first lecture, I had introduced 4 terms to you. What is morphology? What is anatomy? What is physiology? What is histology? 4 terms मैंने इंट्रोड्यूस किए थे. राइट. सो जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग एनाटॉमी बोलते हैं. ठीक है. सो हम लोग अब रूट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से वी नाउ मूव टू रूट का इंटरनल. स्टेम, लीफ, ऑल इंटरनल स्टफ. दैट इज गोइंग एंड इट्स गोइंग टू बी मोर इंटरेस्टिंग and more challenging. Acha, before I start the chapter, one small word of caution. Morphology हमने पढ़ा था ना, वो एकदम प्योरली फैक्चुअल चैप्टर था. मतलब एक्सप्लेन करने के लिए बहुत कम था, याद करने के लिए बहुत ज्यादा था, एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा थे. लेकिन ये चैप्टर में एग्जाम्पल्स बहुत कम है, कंसेप्ट ज्यादा है. So it is more of a conceptual chapter than a factual chapter. There is something always to be learned, but to be understood. Right now, so please, I would request that please pay attention. Right now, तुम्हारा notes, तुम्हारा NCERT खुला होना चाहिए. पेंसिल, पेन, जो भी है सब लेके रखो. And keep an eye on what is there on the screen, what is there in the notes. Right, and at periodical intervals in the lecture, we'll open up for doubts also. Okay, so if you have any doubts, you can make a note and keep. We will solve them. Okay. Okay. Now, as we said, anatomy is all about internal structure. Now, let us first see what are the different topics that we are going to learn in this chapter. First, we'll tackle what are different types of tissues in plants. See, you have done animal tissues ka chapter, you have done epithelial, connective, muscular, and nervous tissue. So now we'll take a plant tissue. So, it will give you a good judgment of what is the difference between an animal and a plant tissue and how different are they in structure and function. Second, what are different types of tissue systems in plant? Right. There are about 3 types of different tissue systems in plant, in the entire plant structure, and NCERT has separately made note of them. Third, anatomy of root, stem, leaf. But यहाँ पर we have to tackle both dicots as well as monocots. मतलब point number 3 में अपने 6 parts हैं. Anatomy of root, dicot, monocot. Anatomy of stem, dicot, monocot. Anatomy of leaf, dicot, monocot. Right, तो 6 parts हम लोग पढ़ेंगे point number 3 में. और point number 4, what is the process of secondary growth? Right, I had introduced the term primary and secondary growth in morphology. जो भी vertical growth है, length wise growth होता है, उसको हम लोग primary बोलते हैं, और जो width wise growth होता है उसको हम लोग secondary बोलते हैं. ठीक है. So width wise growth कैसे होता है प्लांट में, वो हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे. राइट, एंड दिस इज द पैटर्न व्हिच इज गिवन इन एनसीईआरटी आल्सो. राइट, 4 पार्ट्स एनसीईआरटी में भी है, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4. तो आज हम लोग 6.1 टैकल कर रहे हैं, वो भी पूरा नहीं होगा. ठीक है, लेकिन 6.1 अगर आप डिस्कशन देखेंगे इन द एनसीईआरटी, 2 पेज का, ज्यादा नहीं है. एज यूजुअल हम लोग सिर्फ कंजूस की तरह डिस्कस करते हैं हमेशा. राइट, माइंडसेटर्स वाले जरा बड़े दिल वाले हम लोग 1-2 लेक्चर में डिस्कस करते हैं. राइट, सात्विक सर मत पकड़. ओके, ठीक है, ठीक है. ओके, नाउ फर्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन प्लांट्स? नाउ प्लांट्स हैव 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज. आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल प्रॉपर्ली. शिखा, स्क्रीन दिख रहा है बराबर से ना? ओके, ठीक. प्लांट्स हैव 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज. वी हैव मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज. Now, मेरिस्टेमेटिक ऑलरेडी अपने को रूट के टाइम पे आया था डिस्कशन में. राइट, रूट के टिप में देयर इज एरिया ऑफ सेल डिवीजन व्हिच हैज गॉट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू.
right? Meristem, meristem comes from the word meristos. It's a Greek word, meristos, and meristos का मतलब होता है to divide. So meristematic tissues are those tissues where cells have ability of division. Cells have the ability to divide. And permanent are those tissues where cells have lost the ability to divide. See friends, I'm choosing my words very carefully. Permanent में मैंने क्या बोला? They have lost the ability. I didn't say they don't have the ability. I said they have lost the ability. You only lose something when you already have it. See, I give you two statements. I don't have 500 rupees. I have lost 500 rupees. ये दोनों का मतलब अलग है. Right now, if I say I have lost 500 rupees, that means I had 500 rupees. So when I say I have lost the power of division, that means they had power. If they had power of division, that means originally they were meristematic. मतलब ओरिजिनली सारे के सारे सेल्स मेरिस्टेमेटिक होते हैं, उसमें से कुछ का पावर ऑफ डिवीजन चला जाता है, सो दे बिकम परमानेंट. ठीक है. सो टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट. नाउ व्हेन वी से मेरिस्टेमेटिक आर दोज व्हिच हैव गॉट एबिलिटी टू डिवाइड, मतलब सेल डिवीजन तुमको यहां मिलेगा. सेल डिवीजन से नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, टिश्यूज बढ़ेंगे, टिश्यू सिस्टम्स बढ़ेगा, दैट मींस ग्रोथ होगा. So if I ask you, which are the areas in plant which show growth? Your answer will be very simple. Sir, those areas where meristematic tissues are present are those areas जहाँ पे growth मिलेगा. जहाँ permanent tissues है वहाँ growth नहीं है, क्योंकि वो लोग divide नहीं करते. Simple, एकदम simple. Right? So first of all, अपने को ये idea clear होना चाहिए कि meristematic क्या होता है और permanent क्या होता है. Right? Okay. So meristematic cells can divide. Meristematic cells are immature. ये लोग को बेचारे को डिवाइड करने के अलावा कुछ भी नहीं आता है. प्लीज, इनकी लाइफ पूरी डिवीजन में जाती है. दे नो ओनली डिवीजन, मतलब ये आगे बढ़ते ही नहीं. राइट? इमैच्योर. राइट? नॉट लाइक यू आर द वेरी मैच्योर पीपल एकदम. ओके, ठीक है. अनडिफरेंशिएटेड. राइट? सी, डिवीजन ऑफ सेल इज नॉट द ओनली पार्ट ऑफ सेल साइकिल. सेल डिवाइड होगा, फिर इलोंगेट होगा. एरिया ऑफ डिवीजन का क्या आता है? एरिया ऑफ सेल इलोंगेशन. उसके बाद मैच्योर होगा, फिर कोई फंक्शन परफॉर्म करेगा, है ना. बट दीज आर अनडिफरेंशिएटेड, छोटे छोटे बेचारे. ओके. नाउ मेरिस्टेमेटिक में आई हैव पुट 3 arrows. दैट डज नॉट मीन मेरिस्टेम्स आर ऑफ 3 types. Meristems are classified on the basis of 3 criteria. Generally, right now I can see the question mark on Ruta's face now. What is this thing? Okay, sir, classification में types होता है sir हमेशा. No, see, every classification, na friends, has got a criteria. Every classification. पहला लेक्चर याद है, मैंने प्लांट्स क्लासिफाई किए थे. प्लांट्स आर क्लासिफाइड एज फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग. तो अपना क्राइटेरिया क्या था? फ्लावर. अगर फ्लावर है तो फ्लावरिंग, फ्लावर नहीं है तो नॉन फ्लावरिंग. सो डजंट फ्लावर बिकम अ क्राइटेरिया. प्लांट्स आर नॉन वैस्कुलर और वैस्कुलर. जाइलम फ्लोएम है तो वैस्कुलर, जाइलम फ्लोएम नहीं है तो नॉन वैस्कुलर. सो हर एक क्लासिफिकेशन, हर एक डिवीजन एक क्राइटेरिया पे होता है. ठीक है. सो अपने पास मेरिस्टेमेटिक के लिए वी हैव गॉट 3 क्राइटेरिया. सो इफ आई आस्क यू classify meristem, you will in return ask me a question, sir, according to which criteria you want classification. So meristem के 3 classification. सबसे पहले according to origin. Origin means in which part of plant life is the tissue coming. Is it coming early in plant life? Is it coming late in plant life? कभी आ रहा है? That is origin. According to origin, we have 3 meristem: promeristem, primary meristem, and secondary meristem. Promeristem जो है ना, see, I am just introducing this chart. उसके बाद we will take up the individual meristems topic wise. हर एक के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे.
ये जो प्रो मेरिस्टेम है ना, वो एम्ब्रियो के टाइम पे आता है, राइट? यू ऑल नो दैट मेल गैमेट यूनाइट्स विद द फीमेल गैमेट टू फॉर्म द जाइगोट, जाइगोट का डिवीजन होके वो एम्ब्रियो बनेगा। तो डिवीजन होगा तो सेल्स बनेंगे, तो उसमें कौन सा टिश्यू बनेगा? प्रो मेरिस्टेम बनेगा। प्रो विल मेक प्राइमरी, दैट मीन्स प्रो एंड प्राइमरी आर कमिंग वेरी अर्ली इन प्लांट लाइफ। The first tissues to come in plant life are pro and primary. Secondary comes later in plant life, right? अच्छा, how did we define permanent, पृथ्वी? permanent को कैसे define किया? Cells that have lost the ability to divide. Exactly, that means they were early meristematic, पृथ्वी। Yes, sir. बराबर। तो ये जो primary है ना, some of the primary cells will lose their power of division and they will become permanent, right? चलो, I'll give an example, right? ना एक hypothetical, एकदम hypothetical example just to make things clear. समझो मेरे पास जो है ना, I have got 1000 cells primary, 1000 cells, उसमें से 400 lose their power of division, so those 400 will become permanent. समझ में आ रहा है बराबर से? those 400 will become permanent. अच्छा, out of those 400, 200 regain the power of division. Now if they are regaining, they'll again become meristematic. Now they will become secondary meristem, right? मतलब primary will give rise to permanent, permanent will give rise to secondary. ठीक है, समझ में आ रहा है बराबर से, राइट? सो प्राइमरी में से परमानेंट आएगा, लूजिंग पावर ऑफ डिवीजन, रीगेनिंग पावर ऑफ डिवीजन, वापस सेकेंडरी हो जाएगा। आई एम गिविंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नाउ। आर दीज अनडिफरेंशिएटेड? ऑल दीज सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड, लिखा है देखो ऊपर यहाँ पे। सो प्राइमरी विल अंडरगो डिफरेंशिएशन टू फॉर्म परमानेंट, डिफरेंशिएट होके परमानेंट हो जाएंगे, राइट? लेकिन जब परमानेंट में से वापस सेकेंडरी है तो दे हैव टू रिवर्स द प्रोसेस, सो वी विल यूज द टर्म डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन, सो प्राइमरी से परमानेंट, आई गिव यू अ टेबल फॉर ऑल दिस, डोंट वरी, पूरा टेबल दूंगा इसके लिए। प्राइमरी से परमानेंट डिफरेंशिएट होगा और परमानेंट से सेकेंडरी डी डिफरेंशिएट होगा, रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा। तो मुझे बताओ, ये सेकेंडरी विल कम लेटर इन प्लांट लाइफ, ठीक है? अच्छा, इसको प्राइमरी क्यों बोलते हैं और इसको सेकेंडरी क्यों बोलते हैं, राइट? बिकॉज प्राइमरी कॉजेस प्राइमरी ग्रोथ, आई टोल्ड यू प्राइमरी ग्रोथ मतलब वर्टिकल ग्रोथ, एंड सेकेंडरी कॉजेस हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, विड्थ बढ़ेगा उससे, ठीक है ना? बट व्हेन आई एम यूजिंग द टर्म प्राइमरी एंड सेकेंडरी फॉर अ टिश्यू, मेरा इंप्लीकेशन ओरिजिन है, मतलब अच्छा ये अर्ली है, ये लेट है, ऐसा, right? So the use of the word in the chapter is very important. ठीक है? So according to origin, we have pro meristem, primary meristem, secondary meristem. Pro and primary are coming early in life, and secondary is coming late in life. Primary से primary growth होगा और secondary से secondary growth होगा, ठीक है? The second criteria is position. ओरिजिन का मतलब प्लांट लाइफ में कब आया, पोजीशन मतलब प्लांट में किधर है ये, वेयर विल आई फाइंड द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन द प्लांट। अकॉर्डिंग टू पोजीशन वी हैव थ्री मेरिस्टेम्स। अपाइकल मेरिस्टेम, थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है, सुना सुना लग रहा है कि नहीं? हाँ, रूट अपाइकल मेरिस्टेम, शूट अपाइकल मेरिस्टेम, राइट? इफ यू रिमेंबर इन एनसीईआरटी, लीफ में एक लाइन है, the leaves arise from shoot apical meristem, है कि नहीं? What meristem is there in the tip of the root? Root apical meristem. So the meristem present in the apex is apical. Meristem present in the internode वाला area, जहां से leaves वगैरह आते हैं, right? Leaves arise from the node. So जो what is internode? The space between two nodes is called as internode. तो इंटरनोड के बेस में जो एरिया है वहां पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम आएंगे,
lateral meristems are on the sides, right ना, they are on the sides, इससे horizontal growth होगा. Lateral meristems are present, for example अगर ये plant है, right ना, तो they are present parallelly to the entire axis of the plant and they will cause horizontal growth. तो मुझे बताओ, apical and intercalary, aren't they types of primary? Because they result into vertical growth, and lateral is a type of secondary. See, when I am using the term secondary, the secondary meristem is the same as lateral meristem. यही secondary meristem है, यही lateral meristem है. लेकिन जब इसको मैं secondary बोलता हूं, I am saying it has come later in plant. But इसी को मैं lateral बोलता हूं, अच्छा इसका position जो है ना वो side पे है, इससे vertical horizontal growth होगा. The same meristem is secondary, the same meristem is lateral, but the context of calling them is different. I hope you are understanding this. The third is function. According to function, you have three meristems: protoderm, procambium, and ground meristem. Now, protoderm will give rise to epidermis. Wherever you have epidermis, रूट में हो एपिडर्मिस, हाँ रूट में एपिडर्मिस पढ़ा हम लोग ने, एपिग्लेमा जिसमें से रूट हेयर आता है, राइट. स्टेम विल हैव एपिडर्मिस, राइट. समटाइम्स स्टेम हैज गॉट हेयर लाइक स्ट्रक्चर, एपिडर्मिस, यस. लीफ हैज गॉट एपिडर्मिस. In fact, leaf has got two epidermis, upper and lower epidermis, right? तो जहां भी epidermis आएगा ना, it will come from protoderm. Procambium will give rise to xylem phloem. So xylem phloem is coming from procambium. Epidermis और xylem phloem को छोड़ के बाकी जितने भी tissues है, they will come under the category of ground meristem. So ground tissue comes from ground meristem. What is ground tissue? Anything which is except epidermis and except xylem phloem. उसको बाकी छोड़ दो, कुछ, everything will come under ground. So meristematic can be classified according to three criteria. According to origin, meristems are pro, primary, secondary. According to position, meristems are apical, intercalary, lateral. According to function, meristems are protoderm, procambium, ground meristem. So in the next session, if I ask you classify meristem, you will ask me, sir, which criteria? According to function, it is protoderm, procambium, ground meristem. So please next time अगर किसी ने मुझे बोला कि sir there are 9 types of meristem, उसको मैं block कर दूंगा, भगा दूंगा मीटिंग में से, राइट ना, यहीं से किक आउट कर दूंगा, मीटिंग लॉक कर दूंगा मैं. दैट इज द वे ऑफ ड्राइविंग यू आउट ऑफ द क्लासरूम. ओके, ठीक है ना. सो प्लीज, आई होप द मेरिस्टेम वाला पार्ट इज वेरी क्लियर टू अस. नाउ परमानेंट is of two types, simple and complex. So permanent cells cannot divide. Cannot is the wrong word. Lost their ability to divide. They are mature cells. ये immature है, ये mature है. They are undifferentiated. They are fully. I have just used these two boxes to highlight the difference between meristematic and permanent. Permanent are of two types, simple and complex. यहाँ पर मैंने कुछ criteria word use नहीं किया. Permanent are of two types, simple and complex. Simple में we have parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, right? ये भी स्कूल लेवल पे पढ़ा हुआ है अपना. पढ़ा नहीं हुआ है तो सुना हुआ है कम से कम, ठीक है. And complex में we have xylem and phloem, right? What is the function of xylem, Aryan? Aryan यादव? To conduct water. Very good. Phloem का? To conduct food material. Very good. That means xylem and phloem, Aryan, are tissues. So aren't they vessels, Aryan? Yes, sir. So we call them as vascular tissues. We use them vascular tissues. That's why I use vascular plants, non-vascular plants. ठीक है आर्यन, बराबर ना, समझ में आया? Yes, sir. Okay. So never tell xylem and phloem are vessels.
we always say they are vascular tissues, right? Why simple, why complex? When we reach that part, we will do why simple and why complex. What is the reason for that? Okay. First of all, I want everybody to be comfortable with this particular, right? Now, I have already posted the PDF in the group. मेरे ख्याल से already वो group में PDF मैंने इसका post कर दिया है, and I would appreciate if you draw this classification on a piece of paper and keep it handy whenever we are having a lecture every Wednesday, right? ना तो ये side में होना चाहिए तुम्हारे. So the moment I use the word हाँ ये lateral meristem है, so you know you're talking about position. I am talking about colon-chyma. अच्छा, this is a simple permanent tissue, right? ना so this chart should be very handy, and this is इसके ऊपर पूरा tissues हम लोग पढ़ने वाले हैं. Okay, I'll wait here, and I am waiting for your questions now, right? Now if there are any questions till this part of the chapter, we will take them and then we will move ahead. Rutvi, you have raised your hand. Sir, do all promeristem cells divide to form primary meristem? Yeah, pro will divide to form primary. Yes. Okay. Yes, Satvik. Sir, initially you mentioned tissue system. So is that same as the organs? No. Plants, NCRT has described them as tissue systems, right? Now, because wherever this tissue is there in the entire plant, right now they have collected them as tissues. They're not the same as organs. Okay, they're not same as organs. So No, organs no. are not found in plants, right? No, organs Only मिलेंगे. tissues. क्यों नहीं मिलेंगे? मिलेंगे ना, क्यों नहीं मिलेंगे? Okay. Ruta, So what's the difference? right? Yes. So what's the difference then between organs and tissue system? See, tissue system is not one particular. एक जगह पे नहीं. The epidermis of the root is a different structure. The epidermis of the stem is a different structure. The epidermis of the leaf is a different structure. Okay. Right now, हाँ. So the three I got it. epidermis, हाँ, that is dermal tissue system. ऐसा. Ruta, your question, बेटा. Yes, sir. So I did not understand intercalary. हाँ, ठीक है ना. We will talk about it. I told you I'm talking about them in detail. Yeah, after this slide, बेटा. Rida, पूछो बेटा. Sir, I was asking that necessarily all primary meristematic tissue, they will be converted into permanent, or like No, only some of them. and then other they Will directly remain as primary. Will remain primary. so they cannot be directly converted into secondary, no? No. नहीं. Unless नहीं. Okay. Yes, Viraj, बेटा, question. Sir, when we are talking about the criteria of origin, then secondary and primary is for growth. No. Primary early in plant life, secondary later in life. And if you are talking about the others, then it is for growth. Primary का function is primary growth. Secondary का function is secondary growth. ऐसा. So means the others are a type of primary and secondary. हाँ, apical and intercalary are types of primary. Achha. And lateral is a type of secondary. Okay. So that means apical and intercalary, जो position है, they are coming early in plant life. Lateral is coming later in plant life. Okay, sir. Thank you, sir. ठीक है? Okay. Anything else, please? Okay. ठीक. I'll take the discussion आगे, right now. So now first we'll take up entire meristematic for discussion. पूरा meristematic है discussion के लिए ये तीनों criteria लेंगे हम. ठीक है? Okay. So meristematic tissue consisting of dividing cells or cells having power of division, meristematic tissue. Okay. Now what are the characteristics of the meristematic tissue? सबसे पहले ability to divide. Okay, वो तो already mention कर दिया 8-10 बार हम लोग ने अभी. Cells are immature in a continuous state of division. वो भी हमने highlight किया, they are immature. Cells are small in size, isodiametric. Isodiametric का मतलब same in diameter. Iso का मतलब होता है same. Oval or polygonal in shape, arranged compactly without any intercellular spaces. Right? Compactly, समझते हो? Compactly, एकदम tight. Right? ना? Viral train एकदम. Right? ना? Traveling Borivali to Churchgate, एकदम peak hours पे 10 बजे सुबह में. Right? ना? They will know what is the meaning of compact. जो ट्रेन में कभी नहीं गया बॉम्बे में उनको कॉम्पैक्ट का मतलब समझेगा. ओके, ठीक है. सो नो स्पेसेस बिटवीन द सेल्स.
they have thin and elastic cell walls that are made up of cellulose. Right? Now, ये बेचारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स नए नए पैदा हुए हैं यार बेचारे डिवीजन से, तो इनका सेल वॉल थिन है, अभी डेवलप नहीं हुआ बेचारे लोग का, और सेलुलोज का बना हुआ है. ओके, प्लांट में सेल वॉल होता है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होता है, डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, राइट ना. 9-10 में पढ़ा रहेगा शायद, डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, है क्या नहीं. हाँ, द मोमेंट यू से सेल ना, समटाइम्स वो टेक्स्ट बुक का डायग्राम याद आता है अपने को, राइट ना. टेक्स्ट बुक में प्लांट सेल कैसा था, अच्छा वो हेक्सागन शेप था, बाहर वॉल था, राइट ना. हाँ, राइट. सो नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंडरी सेल वॉल मटेरियल इज एब्सेंट. आई टोल्ड यू दीज आर जस्ट डिवाइडेड, डेवलप नहीं हुए, so you don't have secondary. When you learn the details of plant cell, right now you will learn that उसमें there are 3 layers in the cell wall: primary, secondary and middle lamella. तो यहाँ पर सिर्फ primary है क्योंकि just divided cell है, develop नहीं हुआ है. Each cell has a prominent nucleus and a dense cytoplasm. I'll just give you a small hint. Whenever you come across the word dense cytoplasm, चाहे plant में हो चाहे animal में, ऑलवेज रिमेंबर ये सेल कुछ कीड़ा करने वाले हैं. मतलब या तो सिक्रीट करेगा या कुछ फंक्शन करे, कुछ तो करेगा. डेंस साइटोप्लाज्म मतलब एंटीना ऊपर होना चाहिए तुम्हारा, राइट. अभी हॉर्मोन्स है, हॉर्मोन्स का सेल में से आते हैं, तो जितने भी सेल्स हार्मोन सिक्रीट करेंगे सबका डेंस साइटोप्लाज्म मिलेगा, राइट ना. सो ये थोड़ा सा हिंट है तुम लोग के लिए. वैक्यूल्स आर इधर एब्सेंट और वेरी स्मॉल इन साइज. ये इसको बोल्ड में लिखा है. क्यों? क्योंकि प्लांट में फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज ओनली वन वैक्यूल एंड दैट टू वेरी बिग, सिंगल बिग वैक्यूल. लेकिन यहाँ पे क्या है, वैक्यूल्स आर आइदर एब्सेंट और है तो भी वेरी स्मॉल इन साइज, राइट. सो इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल प्लांट सेल. Number of mitochondria is more, the rate of respiration is very high because of rapid metabolism. Now, क्या लेना देना अपने को number of mitochondria से? क्यों नहीं? क्योंकि this is in constant state of division. This is in constant state of division. और बिना एनर्जी के डिवाइड नहीं होता बाबा. कोई भी काम करना है तो एनर्जी लगता ही लगता है, राइट ना. लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या नहीं. एनर्जी के बगैर कुछ नहीं होता है, तो क्या डिवीजन हवा में हो जाएगा क्या? नो, एटीपी चाहिए उसके लिए. तो ये एटीपी कहां से आएगा? माइटोकॉन्ड्रिया से आएगा. अब कांस्टेंट डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियसली दे रिक्वायर मोर एटीपी, मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, राइट. एंड ऑब्वियसली द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज गोइंग टू बी वेरी हाई, राइट. अभी यू ऑल हैव स्टडीड टाइप्स ऑफ टिश्यूज, राइट. टिश्यूज पढ़ा ना, और सारे एपिथेलियल सेल पढ़ा, कनेक्टिव टिश्यू का सेल पढ़ा, राइट ना, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल एंड ऑल दैट. मस्कुलर टिश्यू पढ़ा, उसमें सब. डिडंट यू सी दैट मस्कुलर टिश्यू के अंदर द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वर वेरी हाई, वो भी स्ट्राइटेड में, है कि नहीं. क्यों? क्योंकि काम ज्यादा करना है उसको, एटीपी प्रोडक्शन ज्यादा है, सो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हैज टू बी वेरी हाई. ओके, सो वेरेवर देयर इज हाई अमाउंट ऑफ वर्क, there is high amount of लिवर के सेल में देख लेना आप न्यूट्रिशन चैप्टर करेंगे तो लिवर के सेल में माइटोकॉन्ड्रिया इज हाई बिकॉज काम ज्यादा करना पड़ता है. सो wherever एनर्जी प्रोडक्शन रिक्वायर्ड, माइटोकॉन्ड्रिया इज, ठीक है. देयर इज वेरी लिटिल रिजर्व फूड. सारा का सारा माइटोकॉन्ड्रिया यूज कर लेगा एटीपी जनरेट करने के लिए, कुछ बचेगा ही नहीं. दैट्स व्हाई वेरी लिटिल रिजर्व फूड. सी, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन व्हाई दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर, so that meristematic tissue as a whole is understood by us, please. Okay, so these are the characteristics of meristematic tissue. First criteria number 1, based on origin. I told you, based on origin we have 3: promeristem, primary meristem and secondary meristem. 3. चलो, सबसे पहले Pro is also called primordial meristem. Initial meristem present at an area at the tip of the stem and root. What is the tip
of the stem and root? Isn't it the apex of the stem and root? So aren't we actually talking about the apical meristem? Okay. Occurs in the embryonic stage of the plant. Okay. By repeated cell division, pro will give rise to primary. So pro से primary आएगा. Next is primary. Primary meristems originate from pro. Okay, great. Exist in the plant body right from the beginning. So right from the start, early plant life से है ये. Always in active state of division. Right? Please pay attention. And they give rise to permanent tissues by the process of differentiation. आ गया देखो. तो ये कौन से वाले सेल है? ये 400 है. राइट ना? हाँ, 1000 में से जो 400 निकले ना, those who have lost their power of division. By which process? Differentiation. ठीक है, please. So primary permanent. The primary permanent is parenchyma. The primary permanent is parenchyma is the first permanent tissue to form. इसलिए उसको fundamental tissue भी बोलते हैं. उसमें से फिर sclerenchyma और collenchyma evolve होके बनता है. पहला जो सबसे primitive permanent, सबसे पहला permanent जो बनता है वो parenchyma बनता है. Okay. They form the basic structure of plant body, present at the apices of shoot and root. आ गया वापस apical और shoot और apical root आ गया वापस, right ना? So root apex और shoot apex में कौन से meristems है? Pro and primary. ठीक है? Okay. देखो example देखो ना. Apical meristem example आ गया उसका. Intercalary is also primary. That means intercalary is also coming early in plant life. और है intrafascicular cambium. Intrafascicular cambium. Right? Wherever the word cambium comes, cambium bracket में meristem लिख देना. Right? Wherever the word cambium comes, it is meristem. The only cambium which is primary is intrafascicular. Now, what is intrafascicular? What is interfascicular? आएगा अपने को. Right ना? अगर यहाँ पर लिखना है तो आप लिख सकते हैं the cambium present between xylem and phloem is intrafascicular. The tissue present between the xylem and phloem is intrafascicular. ठीक है? There is interfascicular cambium, there is cork cambium, बहुत सारे cambiums हैं. लेकिन primary यानी starting of the plant life से only intrafascicular is there. बाकी सारे cambium secondary, late in plant life. Right? So ये है pro और ये है primary. बचा अपना secondary. Secondary meristems develop in later stages of the growth. Right? I hope ये origin वाला idea एकदम clear होना चाहिए सबको. Origin मतलब plant life में कब आएगा ये? पहले आएगा बाद में आएगा. They arise. अब ये secondary कहाँ से आता है? क्या बताया था मैंने? Primary से आएगा. हाँ, permanent से आएगा ये. और कौन से प्रोसेस से आएगा? डिफरेंशिएशन का उल्टा, डी डिफरेंशिएशन. वेरी गुड. राइट ना? एंड दिस इज एडिंग टू द गर्थ. गर्थ का मतलब होता है विड्थ. राइट ना? गर्थ का मतलब होता है विड्थ ऑफ द प्लांट. कैम्बियम ऑफ द रूट इंटरफैसिकुलर. यहां पहले आया था इंट्राफैसिकुलर. राइट? कॉर्क कैम्बियम. राइट ना? यानी सारे कैम्बियम सेकेंडरी एक्सेप्ट इंट्राफैसिकुलर. राइट? अगर याद रखने में तकलीफ हो रही है तो जस्ट रिमेंबर इंट्रा इज प्राइमरी, बाकी सब सेकेंडरी. जिधर इंट्रा आया उधर प्राइमरी, बाकी सब कुछ भी आया इंटर आने दो, स्टेम आने दो, इंटरफैसिक, कॉर्क कैम्प, व्हाटएवर, इट इज ऑल सेकेंडरी. क्या आ गया देखो? दे अराइज फ्रॉम पैरेन्काइमा बाय व्हिच प्रोसेस? डी डिफरेंशिएशन. दैट मींस इट इज रीगेनिंग द कैपेसिटी टू डिवाइड. राइट? Now see, I'll give you a small table. Everybody please, I'll go step by step. Please. सबसे पहले आने वाला pro. The first tissue to come is always pro.
प्रो से आएगा प्राइमरी। अच्छा, अब प्राइमरी से क्या होगा? 400 सेल्स डिफरेंस। हाँ 400, वही अपना 1000 वाला एग्जांपल याद रखना। 400 सेल डिफरेंशिएट हो गए और क्या बन गया? प्राइमरी परमानेंट। प्राइमरी परमानेंट से होगा डी डिफरेंशिएशन और क्या बनेगा? सेकेंडरी मेरिस्टेम। हाँ, अभी एक देखो और एक पॉइंट दे रहा हूं छोटा सा, जो अपने को एकदम लास्ट लेक्चर में आएगा। सेकेंडरी मेरिस्टेम में से कुछ सेल्स फिर से डिफरेंशिएट हो गए, रीडिफरेंशिएट, एंड दे विल बिकम सेकेंडरी परमानेंट। तो पहला डिफरेंशिएशन becomes primary permanent. Second differentiation, redifferentiation, becomes secondary permanent. See, I have used the green color for meristematic tissue and red for the permanent. This box will help you to solve many MCQs, and it will prevent any kind of conceptual error in your MCQs, please. Right? This box is important. इसको please आप copy करो. इसको please copy करो. Yes, Rida, बोलो बोलो बेटा। I didn't get that redifferentiation part. हाँ बेटा, ये अपने को लास्ट चैप्टर के लास्ट पार्ट में आएगा। मैंने फोर्थ पॉइंट बताया बेटा, अपने को सेकेंडरी ग्रोथ आएगा बेटा। Yes, sir. हाँ, तो ये लास्ट में आएगा, क्योंकि ये बॉक्स बना रहा था तो मैंने ये लास्ट वाला पॉइंट ऐड कर दिया यहाँ पे। ये अपने को समझ में एकदम एंड में आएगा बेटा। Okay, okay. हाँ, तो Thank you, उसको sir. हाँ, डोंट वरी अबाउट दैट। बट रिदा, डिड यू अंडरस्टैंड डिफरेंशिएशन एंड डी डिफरेंशिएशन बेटा? Yes, yes, very well. ग्रेट ग्रेट, वेरी नाइस। यस नेहा, बोलो बेटा। So not the all cells undergo this नहीं differentiation, नहीं, right? ओनली सम पार्ट ऑफ देम। ओके Okay, sir. ओके, ठीक है। हाँ रिया, बोलो बेटा। Sir, so all secondary meristems come from de-differentiation of primary. Yes, 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 yes. So some cells of the primary permanent will regain power of division to become secondary meristem. ठीक है बेटा? Prithvi, yes बेटा? So not all cells of primary permanent tissue de-differentiate No, back no, into no, secondary no. Whenever they are undergoing de-differentiation or redifferentiation, not all of them will undergo. Some of them. अगर all So हो गया, what are, अगर सब चले गए तो फिर वहां पे सेकेंडरी का काम कौन करेगा? This is so how. what are secondary permanent? हाँ, I just told Rida ना बेटा, we will deal with that when we come to the last part of the chapter, not now. Okay, don't worry, it will come. ठीक है ना? But for now, at least ये secondary मेरिस्टेम तक समझ गया अपने को सबको। पृथ्वी समझ गया? Yes, sir. बस बस, मेरे लिए इतना काफी, राइट ना? राइट ना? ये मेरे तरफ से बोनस है जो लास्ट लेक्चर में आएगा। ओके, ठीक है। सो प्रो हो गया, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, मतलब एक क्राइटेरिया अपना हो गया, ओरिजिन वाला क्राइटेरिया हो गया। वी विल कम टू द नेक्स्ट क्राइटेरिया नाउ। नेक्स्ट क्राइटेरिया इज पोजीशन। पोजीशन के हिसाब से 3 मेरिस्टेम है, अपाइकल, इंटरकैलरी, लैटरल, 3 मेरिस्टेम। डायग्राम तुम्हारे सामने है, बहुत मस्त क्यूट डायग्राम एकदम। ओके, अपाइकल, ये रहा तुम्हारा अपाइकल मेरिस्टेम यहाँ पर, राइट, टिप में एकदम। पहला ही स्टेटमेंट देखो बहुत क्लियर है, इट्स एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम। सो व्हाट इज द स्टेटमेंट टेलिंग अस? कि अपाइकल मेरिस्टेम कम्स अर्ली इन प्लांट लाइफ। व्हेन यू यूज द वर्ड प्राइमरी, मतलब क्या? इट इज कमिंग अर्ली इन प्लांट लाइफ। ठीक है? The meristem which are at the tip of the root and shoot and produce primary tissues are called apical meristems. They are responsible for increase in length. What is that growth called as? Primary growth. Any increase, vertical increase, is called primary growth. Examples of apical, देखो, root apical meristem, shoot apical meristem, root apical, shoot apical. These are examples, right? ठीक है? अच्छा वफा, Yes, sir. वफा एक छोटा सा क्वेरी है, तो विल यू हेल्प मी वफा? Yes, sir. I'll try. अच्छा अच्छा,
वफा रूट में अपाइकल मेरिस्टेम है, स्टेम में अपाइकल मेरिस्टेम है, तो लीफ में भी होना चाहिए था। Sir, but it is secondary, right? Lateral. मेरा क्वेरी है कि लीफ का भी तो टिप होता है ना वफा, इवन लीफ हैज अ टिप, राइट? Yes, sir. तो इफ रूट हैज गॉट अपेक्स में रूट में अपाइकल, शूट हैज गॉट अपाइकल, सो लॉजिकली लीफ में भी होना चाहिए ना बेटा, लॉजिकली। नहीं वफा नहीं, अच्छा ठीक है। Aryan, you want to contribute something? Yes, Aryan. Sir, because root and shoot come from the axis, embryo axis. And leaves हवा में से आते हैं ऐसा? नहीं सर, पर वो लीफ तो शूट से आता है ना। Yes, Riyan, Secondary you type. want to contribute something? So because root and shoot are indefinite in growth Bingo. and Yes. leaf is definite. Yes. Root and shoot are indefinite in their growth. They keep on growing throughout life. उसको बोलते हैं indeterminate growth बोलते हैं उसको, right? But leaf का growth limited होता है. So leaf का growth क्यों limited होता है? क्योंकि उसके पास apical meristem नहीं है. The reason for the limited growth of leaf is that because it does not have a apical meristem, right? So whenever when you start studying, these kind of questions start coming in your mind. अरे यार लीफ का अपाइकल मेरिस्टेम किधर होगा? फिर लीफ में अपाइकल मेरिस्टेम नहीं है, राइट? सो रूट का मेरिस्टेम causes continuous growth of the root. See, this is one of the key differences between animal growth and plant growth. Animal growth is determinate. Determinate का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड है, एक जगह आके रुक जाएगा, कंटिन्यूस नहीं होगा वो। लेकिन प्लांट इनडिटर्मिनेट है, वो ग्रो होते रहेगा, राइट? सी, आप लोग का एज अभी अराउंड 15-16 है, आप अभी भी ग्रोथ के एज में हो, आपका हाइट बढ़ सकता है, वेट में बहुत कुछ हो सकता है, बट एक एज पे 20-21 पे आके हाइट रुक जाएगा। ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर बढ़ते ही रहेगा, नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपना ग्रोथ डिटर्मिनेट है, रुक जाएगा एक जगह आके। प्लांट्स में ऐसा नहीं, बैनियन ट्री बढ़ते ही रहेगा, राइट? विड्थ में बढ़ते रहेगा, हाइट में जाता, इट विल कीप ऑन एक्सपैंडिंग, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ है। लेकिन लीफ चाहे भी है, कोई भी लीफ हो, छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, एक पॉइंट पे आके रुक जाएगा। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर, राइट ना? सो इट विल हैव रूट अपाइकल, शूट अपाइकल, बट नो लीफ अपाइकल। ओके, सो अपाइकल हो गया। नेक्स्ट इज इंटर कैलरी। ये रहा अपना इंटर कैलरी, राइट? ये शेडेड एरिया दिख रहा है अपने को इंटर कैलरी का? यस, it is an example of primary meristem, right? See, again and again, I keep on repeating the same things just because it should be hammered in your head when you read primary. Primary matlab it is coming early in plant life, khatam. So intercalary also comes early in plant life. It is present at the base of internode of monocot stems. Base of the internode. What is an internode? The space, the area between two successive nodes is called as internode. And the base of the internode, like grasses, bamboo, sugarcane, all monocots. It is also present at the base of leaves. ये internode वाला area जो होता है ना, एक मिनट ना, for example, let's say ये जो pencil है मेरे हाथ में, right? ये for example apical meristem, for example, right? अब ये grow हो रहा है, तो एक पॉइंट पे आके ये पूरा अपाइकल मेरिस्टेम थोड़ा ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, राइट? समझो ये जो हाथ में कवर कर रहा हूं ना और ये कवर कर रहा हूं, ये दो अपाइकल मेरिस्टेम के पार्ट्स सेपरेट हो गए। पहले ऐसा था, अब ये सेपरेट हो गया, राइट? अब सेपरेट होगा तो बीच में गैप क्रिएट हुआ है, वो गैप में इंटरकैलरी आएगा, वो गैप में कौन सा टिश्यू आएगा? इंटरकैलरी आएगा। और यहां से जो इंटरनोड के एरियाज है, लीफ वाला पार्ट है, स्पेशली पिटियोल यहां से आएगा। लीफ का जो पिटियोल है वो इंटरकैलरी से आएगा। नॉर्मल लीफ तो क्या पढ़ा हमने? इट कम्स फ्रॉम शूट अपाइकल मेरिस्टेम। एनसीईआरटी स्टेटमेंट पढ़ा लीफ में,
मॉर्फोलॉजी में, इट अराइजेस फ्रॉम शूट अपाइकल मेरिस्टेम। बट लेकिन जो पिटियोल वाला पार्ट है वो कहां से आएगा, वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम से, राइट। ये देखो, बाय एक्टिविटी द लेंथ, अभी इंटरनोड का लेंथ बढ़ेगा तो ऑब्वियसली द वर्टिकल लेंथ विल इंक्रीज। सो वर्टिकल मतलब कौन सा ग्रोथ हो गया, प्राइमरी या सेकेंडरी, प्राइमरी ग्रोथ। इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स अकर्स बिटवीन मैच्योर टिश्यूज, वही बताया मैंने, देखो इट इज अकरिंग बिटवीन टू मैच्योर टिश्यूज, राइट ना। अपाइकल सेपरेट हुआ तो बीच में इंटरकैलरी बढ़ गया। By activity, length of plant organs increases, they occur in grasses and regenerate parts removed by grazing. Now, this is a statement given in the NCERT, इसलिए मैं इसको यहाँ पे लेके आया, right? So, generally when herbivorous animals they pluck grass, वो पूरा grass अंदर से नहीं निकालते, खाली ऊपर का part खा लेते वो लोग, right? So, how does the grass regenerate? By which kind of tissue does it regenerate? By means of intercalary meristem. Grass will propagate through a runner. नया ग्रास जो है रनर से आएगा, लेकिन जो ग्रास का पार्ट टूट गया है वो वापस रीजनरेट कैसे होगा, बाय मींस ऑफ एन इंटरकैलरी मेरिस्टेम। लास्ट में वी हैव अ लैटरल मेरिस्टेम। लुक एट द लैटरल मेरिस्टेम, कैन यू सी, उसका साइड्स पे है ना एकदम, ठीक है। lateral sides parallel to the longitudinal axis. Look at the, this is a vertical axis, it's parallel to that axis. It is composed of initials का मतलब cells, right, which divide mainly in one plane, right. इसका काम है to increase the width, right ना। तो ये अंदर की तरफ डिवाइड नहीं करेगा, ये बाहर की तरफ डिवाइड करेगा ताकि ये width बढ़ाए, उसको बोलते हैं periclinial, right. The manner in which divides towards the outside, that is called periclinial. The periclinial is a direction in which divides, उसको tangential plane बोलते हैं, right ना। And increase the diameter or curve. So lateral meristem, Yaksh. Yes, sir. Lateral meristem is a type of primary or secondary, beta? Sir, secondary. Secondary, right now. So by secondary, what do you mean, beta? Secondary matlab it comes later and exactly. It divides. But when I say lateral, matlab So lateral matlab position side पे है, समझ रहा है यक्ष बराबर से एकदम? Yes. Perfect, very nice. इसके एग्जाम्पल देखो, सारे कैम्बियम्स आके देखो सेकेंडरी वाले, एक्सेप्ट इंट्राफैसिकुलर। इंट्राफैसिकुलर लिस्ट में नहीं, इंट्रा इज प्राइमरी, इंट्रा इज प्राइमरी, प्राइमरी को छोड़ के, इंट्रा को छोड़ के जितने कैम्बियम है सब सेकेंडरी या लैटरल। Some important points to note, please. All secondary meristems are lateral meristems. अब नाउ मैं उल्टा बोल रहा हूं, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि जितने भी मेरिस्टेम्स लेट आ रहे हैं वो सब साइड पे होंगे। पहला क्या था, जितने साइड में है वो सब लेट आते हैं, अब उल्टा बोल रहा हूं। Generally lateral meristems are cylindrical. So to explain that, मैंने साइड पे देखो एक horizontal section दिया है, can you see lateral meristem is circular, cylindrical एकदम, okay. Meristem that occurs in the mature regions of roots and shoots, meristem that occurs in the mature region of roots and shoots of many plants, particularly those that produce woody axis. Some of the plants we have studied are herbaceous, stem green होता है, लेकिन जो plants बढ़ते हैं woody axis है, वहां पे you will find this lateral meristem. गर्थ जिसमें मिलेगा उसमें lateral meristem मिलेगा, ठीक है। So overall, what are the functions of Sir, can you show the previous slide one time? ये लो, क्या कॉपी करना है बेटा? सर वो 3 पॉइंट है ना नीचे पे। हाँ, शायद ये नोट्स में नहीं दिया हुआ ये पॉइंट्स, यू नो, नहीं है, राइट ना। ये पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ तुम लोग साथ में, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड इट, ग्रुप में डाला है, हाँ ग्रुप में डाला है, हाँ, यू कैन कॉपी इट लेटर ऑन, नो प्रॉब्लम,
ठीक है, ओके। सो अपना सेकंड क्राइटेरिया हो गया, राइट। पहला क्राइटेरिया क्या था अपना, ओरिजिन। दूसरा क्राइटेरिया क्या था, पोजीशन, राइट। नाउ थर्ड क्राइटेरिया, फंक्शन। So can you repeat what's the meaning of periclinally? Pericline is the plane of division, लिखा ना, it's the plane of division, tangential plane ना, the direction in which it divides it, right. I'll try to locate a good image for periclinial and I'll post it, don't worry, right ना। the जो सेल कौन से प्लेन में डिवाइड होता है, राइट ना, दैट इज पेरिक्लिनियल, ओके। I think it can be explained best by an image only. I'll try to post an image. I'll try to get it next time for you. Don't worry. Okay. अपना तीसरा क्राइटेरिया, तीसरा क्राइटेरिया क्या है, फंक्शन। फंक्शन में तीन है, प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टेम। थ्री। प्रोटोडर्म, outermost layer of young growing region which gives rise to epidermis। मैंने बताया था, जहां भी एपिडर्मिस मिलेगा, रूट का एपिडर्मिस, स्टेम का एपिडर्मिस, लीफ का एपिडर्मिस, they collectively will form epidermal tissue system, and this comes from a group called as protoderm, right? So if I'm talking root hair, protoderm. If I'm talking stem hair, protoderm. If I'm talking stomata in the leaf epidermis, protoderm. Epidermis और उसके related सारे structures will come from protoderm. Second is procambium. क्या लिखा है देखो, which give rise to primary vascular tissues. Vascular tissue system मतलब xylem and phloem will come from procambium. Ground meristem. ग्राउंड मेरिस्टेम मतलब आई टोल्ड यू, जो भी एपिडर्मिस एंड जाइलम फ्लोएम को छोड़ के whatever is the tissue, it forms a part of ground tissue system. इसको ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं। हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, मेडुलरी रेस, पिच। वेट अ मिनट, एक मिनट। हाँ, ये देखो, दिस वाज द स्टार्टिंग इमेज अपना, याद है क्या ना। कैन यू सी द एपिडर्मिस की आउटर मोस्ट लेयर दिख रहा है सबको? हाँ, कैन यू सी द रूट हेयर अराइजिंग फ्रॉम द एपिडर्मल सेल्स, मतलब ऑब्वियसली ये रूट का डायग्राम है, ठीक है। अच्छा, कैन यू सी दिस सेंट्रल पार्ट ना, द रेड डॉट्स एंड द ब्लू वंस, दोज आर जाइलम एंड फ्लोएम, राइट। अच्छा, जाइलम और फ्लोएम को कैन यू सी दिस येलोइश रिंग सराउंडिंग which is labeled as pericycle, right? अच्छा, येलोइश के बाद और एक ये बाहर का लेयर है जिसमें ये रेड छोटे छोटे स्ट्रिप्स है, राइट। दिस इज एंडोडर्मिस, ये एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस, अच्छा, कैन यू सी दीज सेल्स लेबल्ड एज कॉर्टेक्स, राइट। सो एपिडर्मिस के अंदर आएगा कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में आएगा एंडोडर्मिस, उसके अंदर आएगा पेरिसाइकल, पेरिसाइकल में आएगा जाइलम फ्लोएम। ये जो सेंट्रल पार्ट है ना यहाँ पर, वहां पर एकदम एक पार्ट आता है पिथ करके, पिथ। और कुछ प्लांट्स में एपिडर्मिस के नीचे होता है हाइपोडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स आता है। सो ये बता मुझे, एपिडर्मिस विल कम फ्रॉम प्रोटोडर्म, जाइलम फ्लोएम विल कम फ्रॉम प्रोकैम्बियम, और फिर ये कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ, एंडोडर्मिस, ऑल दिस विल कम फ्रॉम ग्राउंड मेरिस्टेम, ground tissue system, right? So I hope this ground tissue system is clear. Please, this was a good image to explain. Okay, right, protoderm and grounds, ठीक है। Now there are a couple of images which I want to share with you. ये देखो, ये दो है, right? थोड़ा सा जूम करूं मैं, ये देखो, दिस इज द शूट अपेक्स का इमेज एंड दिस इज रूट अपेक्स का इमेज। हैव अ लुक एट द आउटरमोस्ट लेयर, एपिडर्मिस। कैन यू सी ब्रैकेट में क्या लिखा था यहाँ पे, प्रोटोडर्म। दैट मींस एपिडर्मिस इज डेवलपिंग फ्रॉम प्रोटोडर्म।
ये देखो बीच में जाइलम फ्लोएम आएगा, क्या लिखा है यहाँ पे, प्रोकैम्बियम, और यहाँ पे क्या है, कॉर्टेक्स को पिथ, ये सब क्या आएगा, ग्राउंड मेरिस्टेम. This is the root apex. This is a very nice image. Right now, this has been taken from a book called as Truman. Okay, जो अपना सोर्स बुक नहीं है, रेफरेंस बुक है. The apex of the root यहाँ पर है. Can you see root apical meristem लिखा हुआ है यहाँ पे? ये apex of the root है, ये root cap है. This image is telling us that root cap is a structure which does not belong to the plant. ये एम्ब्रियो से नहीं, ये एम्ब्रियो के बाहर से निकलता है, ठीक है ना. सो रूट कैप इज लाइक, ये रूट है, यहां से रूट कैप ऊपर से आता है, ऐसा इज एन एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर. हैव अ लुक एट दिस. ये देखो ये वाला स्ट्रक्चर, दिस इज एपिडर्मिस. क्या लिखा है देखो यहाँ पे, प्रोटोडर्म. राइट, सेंट्रल में जाइलम फ्लोएम वाला स्ट्रक्चर प्रोकैम्बियम. Cortex and pith are labeled as ground meristem. Yes, please. Clear है ये? हाँ, right. So according to function, it is protoderm, procambium, and ground meristem. One more image I want to share. ये देखो. This is also a very good image. ये देखो. Can you see the sky blue color का part? Epidermis एकदम outermost layer है, protoderm. बीच में जाइलम फ्लोएम, पर्पल वाला पार्ट प्रोकैम्बियम. बीच में सारे टिश्यूज, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, ये सब ग्राउंड मेरिस्टेम. राइट, देयर आर अदर पार्ट्स आल्सो व्हिच वी कैन अप्रिशिएट हियर. ये देखो, कैन यू सी दिस राउंडेड पार्ट, डॉटेड पार्ट है ना, वो अपाइकल मेरिस्टेम है, रूट अपाइकल मेरिस्टेम. कैन यू सी ये रूट कैप है. द डिफरेंट जोन्स, ये देखो, जोन ऑफ सेल डिवीजन, जोन ऑफ इलोंगेशन. प्लीज इफ यू कैन क्लोजली सी, थोड़ा और जूम करने की कोशिश कर रहा हूं मैं. लुक एट द सेल्स ऑफ सेल डिवीजन, इतने छोटे छोटे सेल्स हैं. लुक एट जोन इलोंगेशन का सेल्स, कैन यू सी बहुत लंबे हो गए इंडिविजुअली. दैट्स व्हाट इज जोन ऑफ इलोंगेशन, एंड दिस इज जोन ऑफ मैचुरेशन. कैन यू सी रूट हेयर कमिंग आउट ऑफ जोन ऑफ मैचुरेशन नाउ? सारा समझ में आ रहा है बराबर से? Because there were a lot of questions coming, sir, zone maturation और root hair का region अलग है क्या? नहीं, root hair is coming from zone of maturation. ठीक है? So this is the topic of meristematic tissue. So functions of meristem: giving rise to new leaves, branches, flowers, internodes, petioles, intercalary, vascular, xylem, phloem, thickness, right? All these are functions of meristematic tissues. Right, so meristematic tissue हो गया अपना complete. Before I move to the next, if there are any questions, please. There are two people who have already raised their hand. Yes, Viraj, your question beta. Sir, what are medullary rays? आएगा अपने को, आएगा सर. वो प्लीज होल्ड करो. राइट ना, जब जाइलम फ्लोएम का पार्ट पढ़ेंगे उसमें मेडुलरी रेज आएगा, डायग्राम भी दूंगा उसका. फिक्र मत करो बेटा. Yes, Riyansh, you have a question? So when we say that leaves arise from the shoot apical meristem, so they don't have the meristem any longer. It's become a permanent tissue now, right? Yeah. And same with flowers? Yeah. Yes. Okay. Thank you. Tarini, bolo. So I had the same doubt. Okay, Ruta, you have a question? Sir, I just wanted to confirm that the leaf arises from the shoot apical meristem and the petiole arises from the intercalary. Okay. Rida. Yes, sir. But a tissue between xylem and phloem is intrafascicular cambium, not procambium. Intrafascicular. ठीक है रिदा? Okay. Coming to permanent tissues, right? So permanent tissue कैसे आएगा अपना? Yes, Hitaksh, can you help us? By differentiation of primary
वेरी गुड, एक्सीलेंट. प्राइमरी का डिफरेंशिएशन विल मेक परमानेंट फॉर अस. ठीक है ना. अब क्या लिखा है देखो, दे आर फॉर्म्ड बाय डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. The cells of the permanent tissue do not generally divide further. Right? Generally, ये word generally बहुत बकवास है एकदम, मतलब कभी कभी हो सकता है ऐसा. ठीक है ना. The cells may be living or dead. Interesting. So permanent tissues पढ़ते वक्त एक नजर अपनी होनी चाहिए whether the cell is living or dead. ठीक है. Okay. So permanent are two types. We have simple and complex. Now, why simple and why complex? Very interesting part. Tanushri Matre, Yes, sir. or define tissue beta. Group of cells. Very good. That are They perform. They are similar and they perform the very good. Very good. functions. Bolo, very, very nice. So a group of cells, and that group is similar in structure, similar in function. Yes. है ना? And they perform one similar function. बराबर ना? तो Yes, sir. यहाँ पर we have a simple permanent which is made up of only one type of cell, which is actually satisfying the definition of a tissue, जिसमें आएगा parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. Right? हमारे पुराने साथी है 6th 7th के parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. But complex, right? कहानी में twist यहाँ पर है. It is made up of many types of cells. Xylem and phloem. So xylem as a tissue is not made up of only one type of cell. Xylem is made up of 4 types of cells. Phloem is made up of 4 types of cells. See, understand क्यों simple और complex में differentiation. ये simple इसलिए है क्योंकि it is single. So parenchyma में जितने cells है all are same. कॉम्प्लेक्स में जाइलम ये 4 टिश्यू से बना होगा. इनफैक्ट पैरेनकाइमा देखो, जाइलम पैरेनकाइमा, फ्लोएम पैरेनकाइमा, अलग अलग टाइप के सेल्स है which make this tissue. That's why this is complex. Right? So we will take up parenchyma. Right? क्या टाइम क्या होगा? 1:15. ना पैरेनकाइमा लास्ट है आज का. Right? उसके आगे आई डोंट थिंक सो आप लोगों का कैपेसिटी होगा. ठीक है. सो नहीं, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं कंटिन्यू करूंगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं है. राइट ना. लेकिन आप लोग बोलेंगे नहीं, प्रॉब्लम वो है. ओके. ठीक है. जनरली देयर इज एन ऑब्जर्वेशन व्हिच आई मेक इन द क्लास. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर, अराउंड अबाउट 1 hour 15 minutes हो जाता है ना, तो आई कैन सी द फेसेस, थोड़ा वो ड्रूपिंग वाला, अरे यार अभी और है ऐसा. तो आई कैन सी द इंटरेस्ट वेनिंग एक्चुअली. सो इट्स एन इंडिकेशन एक्चुअली. बट देन सडनली व्हेन यू टेल ना, ओके दिस इज द लास्ट टॉपिक, एवरीबॉडी सडनली फ्रेश. ओके अभी खत्म होएगा एकदम. राइट. हाँ. सो ठीक है. पैरेनकाइमा इज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे. डोंट वरी. पैरेनकाइमा लिविंग टिश्यू. मैंने क्या बोला, सबसे पहला पॉइंट अपना क्या है, लिविंग है डेड. राइट. अच्छा श्रीनिकेत, Yes, sir. व्हेन आई से अ सेल और अ टिश्यू इज लिविंग और डेड, क्या मतलब होता है उसका? So that if it's living, it's performing those basic 7 processes. It's like Okay. respiration, movement. Okay, And very good, very if it's good. dead, it's not performing any metabolic reactions. Exactly. So in other words, if I say, if a cell has got nucleus and cytoplasm and all the other organelles, that means it's a living tissue. And Yeah, I guess you can say. yeah, and if there is no nucleus, no cytoplasm, it's a dead. Okay. Yeah. So when we are saying living, that means it is understood that हाँ इसमें nucleus, cytoplasm वगैरह सब कुछ है. Okay. Yes, sir. Okay. Thanks. Cells may be oval or circular, loosely arranged with intercellular spaces.
see, I'd like to draw your attention towards this part, A and B. Oval or circular. Can I see this oval shaped structures here? Right now? And if oval shaped structures are there, I can see intercellular spaces also. Right? But the parenchyma can be like this also. जहां पर intercellular spaces नहीं, I can see कि इसमें nucleus है, cytoplasm, I can see that. Okay. See, simple to understand is, if the box has got laddus, intercellular spaces are there in between. But if the box has got kaju katri, there are no intercellular spaces. All are packed, exam, compact arranged, no spaces in between. Okay. So cells are oval, loosely arranged with intercellular spaces. They have cytoplasm, vacuole, and nucleus. They are living, so they should be having. Cell walls are thin, made up of cellulose and pectin. Right? It's a plant cell. Obviously, you expect to have a cell wall, and the cell wall has to be made of cellulose and pectin. Cellulose is also a carbohydrate. Pectin is also, right? Just a cellulose compound है, वैसे pectin compound है. Right? Now, ये जो point number 1, 2, 3 था, it was talking about the structure of parenchyma. Right? How is the shape? What is there inside? Now, the location. Where can we find parenchyma? Plant body में parenchyma किधर मिलेगा? See, parenchyma का main function na is storage of food. The food is stored in parenchyma tissue. So whenever we are talking of any part of the plant, be it root, stem, leaf, or be it seed, kuch bhi, if it has got food, which tissue is present? Parenchyma. Simple. Let's see. Fleshy and edible roots. Have you done sweet potato? Is it fleshy and edible? Yes, it's a root. That means the tissue inside that sweet potato is nothing but parenchyma. Fleshy and edible stem. We have covered rhizome, tuber, corm, bulb. All store food. So that stem which is storing food is what tissue now? Parenchyma. Fruit. Every fruit has an edible part. वो मैंगो का मीजो का पल्पी वाला पार्ट. तो मस्त मजे से जो खाते हो तो क्या खा रहे तुम लोग? पैरेंकाइमा. ओके. सीड. Can seed sometimes be edible in the fruit? Yes. Your very favorite plant, pea. Pea ka seed, right? Na? So that food is nothing but parenchyma, right? So every edible part in the plant is nothing but parenchyma, because the main function of parenchyma is storage of food. It is found in epidermis. It is found in cortex. It is found in pith. I showed you what is epidermis. The outermost layer is made up of parenchyma. Cortex, the 3 to 4 layered structure between epidermis and endodermis, is called as cortex. It is also made up of parenchyma. Pith, the central part is called as pith. Ekdam. Xylem phloem may be ekdam central. The central part of the plant is called pith. Mesophyll of leaves. Right? Earlier in the lecture, I mentioned that leaf में दो epidermis है, upper epidermis, lower epidermis. दोनों के बीच में जो parenchyma है ना, दोनों के बीच में जो parenchyma है, उसको बोलते हैं mesophyll. ये देखो यहाँ पे. Can you see palisade parenchyma, spongy parenchyma? ये leaf का part है. Right? That is leaf. Okay. So mesophyll is the tissue between upper and lower epidermis of the leaf. Also present in xylem and phloem. I just pointed out, xylem में जो चौथा सेल था वो क्या था? Xylem parenchyma. Phloem में जो सबसे लास्ट पार्ट था क्या था? Phloem parenchyma. So parenchyma is also present in xylem and phloem. Right? So we are trying to see where all we can find parenchyma in the plant. It is the most simple and primitive tissue. पहला permanent tissue जो develop होगा वो होगा parenchyma. और बाकी के जो permanent tissues है उससे develop होंगे. Right? I told you that's why it is also called as the fundamental tissue. Yes. D differentiation. आगे वापस देखो. See, understand why I have given you that
red and वो green वाला table. So whenever these terms come, now you can go back to the table and understand this point. So parenchyma क्या है? Permanent. Permanent से meristematic will be differentiation का opposite. So that capacity of division is coming back. So de-differentiation helps to develop vascular cambium, cork cambium. What are vascular and cork cambium? They are secondary meristems. They are secondary meristems. And what do secondary meristems do? Which growth? Secondary growth. Secondary growth मतलब width, right? So जब secondary growth होगा later in plant life, that time you want secondary cambium, lateral cambium. That time the parenchyma will de-differentiate. Yeah. So this is parenchyma. Now there are some special instances of parenchyma. Some special instances. Please focus here. As I said, the main function of parenchyma is storage of water. Storage of food, I'm sorry. In xerophytes, it helps in storage of water. Xerophytes, you know, plant growing in dry areas, desert areas. So it will help in storage of water also. So plants like, for example, Opuntia, Muhlenbeckia, Euphorbia, जो phyllocladem examples हम लोगों ने किए. Okay. Have a look at this. We said leaf में जो mesophil है. Leaf में mesophil है. Right? What is the mesophil? Present between upper epidermis and lower epidermis. दोनों के बीच में. That parenchyma, palisade, spongy, has got chloroplasts. That's why it is green. It has got chloroplasts. So if the parenchyma ka cell has chloroplast, such a parenchyma is called as chlorenchyma. So how do you define a chlorenchyma? A parenchyma having chloroplasts. I can think of two places. एक तो leaf का mesophil. If the young stem is green, then it can be parenchyma. ये देखो, mesophil of leaves and outer cortex of green stem will have chlorenchyma. ठीक है? अच्छा, look at this diagram, G वाला diagram, right? Now in water plants in water, hydrophytes, right? See, hydrophytes ना दो टाइप के होते हैं. One which are completely under water, उसको हम लोग बोलते हैं submerged hydrophytes, and the other which are floating on water, उसको हम लोग बोलते हैं floating hydrophytes. So यहाँ पे I'm talking about floating hydrophytes. वहां पर the parenchyma cells के बीच में there is a lot of area. Can you see this cavity? Air cavity. So this cavity gets filled with air. What happens? Air will rise up और उसके साथ पूरा plant ऊपर आके float होगा. So a parenchyma with air cavities is called as aerenchyma. Is called as aerenchyma, which will store air and help the organs to float. See, the ability of floating is called buoyancy. तो कभी MCQ में ये word आ गया buoyancy. You know, buoyancy is to ability to float. Buoyant बोलते हैं ना उसको. Ability to float. Okay. So एक है chlorenchyma, दूसरा है aerenchyma. Third point, right? थोड़ा सा extra attention, please. क्या लिखा है? Fiber-like elongated cells of parenchyma. Please. यहाँ पे the word fiber. Generally, you know, when students read fiber, अच्छा fiber मतलब thread-like रहेगा. No. यहाँ पे the word fiber means sclerenchyma. यहाँ पे the word fiber means sclerenchyma. Right? यहाँ पर notes में आपके जो fiber-like लिखा रहेगा, तो वहाँ पे please mention sclerenchyma. Sclerenchyma is of two types, fibers and sclerids. So it is that fiber that is talking about. Have a look at this diagram of C वाला diagram. Normal parenchyma कैसा होता है? Oval होता है, right? But कुछ parenchymas elongated होते हैं. Can you see elongated parenchyma here? Right?
अंदर न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म मतलब लिविंग है। स्क्लेरेनकाइमा का फाइबर स्ट्रक्चर भी ऐसे ही होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, वहां न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म नहीं होगा, वो डेड टिश्यू इसलिए। So it is fiber-like elongated cells. So fiber-like मतलब sclerenchyma का fiber-like. Right? Now, come to this part. E वाला diagram. Look at the epidermis. Right? Epidermis is made up of parenchyma. Can you see a small layer above the epidermis labeled as cuticle? Right? So there is a substance called as cutin. लीफ के ऊपर, लीफ का जो एपिडर्मिस है उसके ऊपर क्यूटिकल होता है, और ये क्यूटिकल उसको प्रोटेक्ट करता है, लीफ को प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो एपिडर्मल सेल है, वी से इट इज क्यूटिनाइज्ड, दिस एपिडर्मल लेयर इज क्यूटिनाइज्ड, सो दिस इज अ क्यूटिनाइज्ड पैरेन्काइमा। ऐसा पैरेन्काइमा व्हेन इट इज गिविंग प्रोटेक्शन, उसका सेल वॉल थोड़ा सा थिक होगा, राइट। नॉर्मल पैरेन्काइमा का सेल वॉल थिन होता है, लेकिन जो क्यूटिनाइज्ड पैरेन्काइमा है उसका सेल वॉल थोड़ा सा थिक होगा, एंड बिकॉज इट इज थिक इट विल गिव रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन। Such a parenchyma is called prosenchyma. This is a prosenchyma. See, A में क्या लिखा है, A B is normal, A rounded है, B angular है, C is prosenchyma, fiber like, right? E epidermal cell with cuticle, F is mesophyll, ये leaf वाला है, and G is parenchyma, right? That's why I have got this collective diagram for you. All the types are illustrated in this diagram itself. ठीक है? So what are the three special types? Chlorenchyma, parenchyma, and prosenchyma. Chlorenchyma, green, photosynthesis. Parenchyma, hydrophytes, floating of plants. And prosenchyma, थोड़ा सा thick cell wall with protection and rigidity. Clear, please? Parenchyma associated with xylem and phloem. Xylem parenchyma, phloem parenchyma. The last cell which I had given, xylem phloem की list में. Helps in storage as well as conduction. चूंकि ये parenchyma है तो storage होगा. Because it is a part of xylem and phloem, it will help in conduction also of food and water. ठीक है? So that finishes our parenchyma वाला part. We are still left with collenchyma and sclerenchyma. Right? So if there are any doubts till here in parenchyma, मेरिस्टेम हो गया था, parenchyma का कुछ doubts है तो please, yes रिया बेटा बोलो. So can you put the diagram once, because I have a doubt in the diagram of parenchyma. Okay, give me a minute बेटा. Yes. Yeah, yes Riya. So here the bead part, it's a normal parenchyma, right? But it Yeah. doesn't show intercellular spaces. Yeah, then Here it's written. it's an angular. देखो B लिखा है angular यहाँ पे. Yes, sir. It can be like this also, right? It can be like this also. Okay, sir. Thank you. Yeah. Yes, Preeti, you have a question, beta? Sir, in notes it is given that permanent tissues have no power of cell division, so it should be lost. हाँ, lost power. ठीक. शिखा? So parenchyma is a part of epidermis, right? So we can say it is an example of protoderm. Example of? Protoderm, meristems based on function. नहीं, epidermis develops from protodermal, right? But वो क्या है बेटा? Meristematic है ना वो तो? हाँ. But some of the meristematic we said will lose their power of division to become permanent. तो parenchyma बन जाएगा फिर वो, है क्या नहीं? हाँ. Yes, Viraj, question. Sir, in the morphology chapter, there was a modification of the roots, buoyant roots. So, sir, would they also have the parenchyma? Parenchyma, yes. Okay, and sir, in all these modifications of the parenchyma, sir, the main function will be food storage only, or what? See, wherever, whatever function is required, यहाँ पर it will store food, but along with that, it is helping to
achieve other functions also. Where leaf में see there is no storage of food. Storage of food stem में होता है. Leaf performs photosynthesis. There is some part for food for leaf also, but it doesn't store all the food. तो जो पैरेन्काइमा है वो फूड तो स्टोर करेगा ही करेगा, लेकिन उसका अपने क्लोरोप्लास्ट है तो वो फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है. सर तो मेन फंक्शन फोटोसिंथेसिस हो जाएगा. अगर वो क्लोरेनकाइमा है तो मुझे पहले मेंशन करना पड़ेगा फोटोसिंथेसिस. अच्छा, ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर. यस रुता. Sir, so in epidermis, some of the cells are meristematic and some are permanent. Yeah.